लंबी यात्रा है, एक लंबा संघर्ष है इसके पीछे, और आज अपने दम पर एक बड़े मुकाम पर है। यूएस की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, भारतीयों का एक बड़े नेता के रूप में यूएस में प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएस ग्लोबल बिजनेस फोरम, यूएस एशिया बिजनेस फोरम के फाउंडर हैं पिछले 20 सालों से। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस का एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। आज 1 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत नेटवर्क पूरी दुनिया भर में बना करके और भारत के लिए कुछ करने की मंशा रख रहे हैं। आज हम लोग के बीच यूएस एशिया बिजनेस फोरम के माध्यम से, यूएस ग्लोबल बिजनेस फोरम के माध्यम से भारत के उद्यमियों को, भारत के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री केवल किशोर कौर। Anyway, ladies and gentlemen, when the technical thing is done, then we'll talk. The reason I wanted you to show this video was in 2006. Prior to that, since 2000, there's an organization called FICI in India. They were chasing me, Kevin, when we do a show in Chicago or any part of in America, only 20 people show up. Within CII, FICI, US, India Business Council, name a chapter of Congress that you know in India, ASSOCHAM, FIO, all these organizations. The reason why this happens and why they need US Asia Business Forum for the growth of India or US Global Business Forum for the growth of India is because, plain and simple, business is just one liner that is understood in 30 years of entrepreneurial world. 30 साल मेरा होने वाला next year as an entrepreneur. 1996 I started, I became an entrepreneur. 2026 I will be 30 years complete. मैंने एक ही चीज सीखा है, जो सबसे अमीर आदमी वर्ल्ड के जो बने, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, या बिल गेट्स हो, या एलन मस्क हो, उनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है हमसे। They don't have super brains, but they all have one thing in common. Contact, the difference between the word contact and the word contract is a letter R, right? R is the difference between contact leading to a contract. वो मेरे को 30 साल लगा समझने में, 20 साल लगा इतने लोग के, 10 साल लगा ये समझ आज क्या चीज है। वो आज आपका ग्लोबल फोरम है, रिलेशनशिप। बिल गेट्स की मां अगर बोर्ड मेंबर नहीं होती थी रेड क्रॉस में, IBM सोर्स कोड मांगता था माइक्रोसॉफ्ट का, राइट? $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को, बिल गेट्स को दिया, जो उसने चोरी किया कहीं और से, और उसको वो सोर्स कोड IBM ने पहली बार लाइफ में नहीं मांगा, तब जाके बिल गेट्स बना बिल गेट्स। उसकी मां थी बोर्ड मेंबर ऑफ रेड क्रॉस, बाप भी इन्फ्लुएंशियल था। तो जो आम चीज है ना, वो आपका ग्लोबल फोरम है। और लॉस एंजलिस जो अड्डा है वर्ल्ड का, न्यूयॉर्क इज नॉट द, न्यूयॉर्क इज ओनली द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लॉस एंजलिस इज अ सिटी with all major industries.